Welcome SCPites to our presentation on chapter number 5, The Lost Child, and this is part 4 of our presentation. So children, we have learned a lot of things in our previous presentation, right? So we are going to continue with this chapter, right? So what happened? The tears they were rolling down from the little boy's eyes, and hot furious his flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first and then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. Having run to and fro in a rag of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. Now what happened? This boy, he was crying. So what happened? His tears they were rolling down from his eyes. ठीक है, आंसू बाहर निकलते ना आंखों के बाहर से, तो ऐसे ही the tears they were rolling down from his eyes. Hot fierce his flushed face. Flushed मतलब red face, ठीक है. So hot fierce flushed face मतलब angry red face was convulsed with fear. मतलब जो angry face था, red face था, वो किस में convert हो गया था? फियर में कन्वर्ट हो गया था, डर में. ठीक है, तो पहले क्या था, बॉय एकदम गुस्से में था, ही वॉज वेरी एंग्री. ठीक है, एंड ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट दैट ही वांटेड टू टेक अ राइड इन अ राउंड अबाउट. So how did he say that? He said that with a red face, flushed face. Now this flushed face, when he turned around and he saw that they were like, he did not see his parents over there. So what happened? His flushed face, red face, it got converted or convulsed, ठीक है, into fear, with fear we can say. Now panic stricken, like this boy, he did not find his parents, right? So he got very scared. So at that time he got panic stricken, ठीक है. Now he ran to one side first and then to other, hither and thither in all directions. Now what happened? This boy, he ran to one end first, then he ran to the other side, and then so what happened? This boy, he ran to the first side, then he ran to the other side, and then he ran hither and thither in all directions. मतलब जो बॉय था पहले एक तरफ भागा, फिर दूसरी तरफ भागा, और फिर इधर उधर सारी जगह सारे डायरेक्शंस में वो भागा. तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया? हितर एंड थितर इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है, नोइंग नॉट वेयर टू गो, मतलब उसे पता नहीं था किधर जाना है, उसके पेरेंट्स किधर है, लेकिन वो इधर उधर भाग रहा था अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए. ठीक है, पहले वो एक तरफ भागा, फिर वो दूसरी तरफ भागा, एंड देन ही रन हितर एंड थितर इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब वो सारी जगह भागा था. ओके, एंड नोइंग वेयर नॉट टू गो, मतलब ही वॉज नॉट नोइंग वेयर टू गो, वेयर हिज पेरेंट्स इज, राइट, दे आर मदर फादर ही वेल्ड. अब वो जब ढूंढने इधर उधर भाग रहा था अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, तब वो क्या कर रहा था? वो मदर फादर करके चिल्ला भी रहा था, जिससे उसके पेरेंट्स को वो सुनाई देगा. ओके, now his yellow turban came untied and his clothes became muddy. Having run to and fro in a rag of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. Now what happened? This boy, इसकी जो टर्बन थी, येलो कलर की टर्बन, जैसे हम कैप पहनते ना, वैसे ही इसके सर के पास ने येलो कलर की टर्बन पहन रखी थी. ठीक है, नाउ इट गॉट अनटाइड, मतलब वो खुल गई थी, एंड हिज क्लॉथ्स दे बिकेम डर्टी, दे बिकेम मडी. Now having run to and fro in a rag of running for a while, he stood defeated, and his cries they surprised into sobs. Now what happened? This boy, he ran everywhere in all directions to find his parents, but he could not find his parents. So now this boy, he stood in one place, and then like how did he stand? He stood defeated, मतलब वो हार मान चुका था कि उसको उसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं. ओके, and his cries they suppressed into sobs, मतलब जो उसका रोना आ रहा था उससे, वो किस में सप्रेस हो गए थे? इट्स सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, मतलब बिना आवाज़ के जब हम रोते हैं ना, रोना तो हमारा रहता है पूरा आवाज़ निकाल के हम रोते हैं, राइट, बट सॉब में क्या होता है? व्हेन वी सॉब वी डू नॉट मेक एनी साउंड. ठीक है, आंसू आ रहे हैं एंड देन वी आर टेकिंग हैवी ब्रीथ ऑल्सो, बट नो वॉइस इज कमिंग, दैट इज कॉल्ड सॉबिंग. नाउ a little distance on the green grass he could see, through his filmy eyes, man and woman talking.
He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his mother and father among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sobs lingering mother, father near the entrance of the temple. However, the crowd became very thick. Man jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. Now, what happened? At a little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes man, woman talking. तो what happened? This boy where he stood, वो जहाँ पे खड़ा हुआ था वहाँ से उसको कुछ डिस्टेंस के बाद कुछ दूरी में उसे एक ग्रीन ग्रास दिखाई दे रही थी. वहाँ पे बहुत सारे मैन और वुमेन मतलब आदमी और औरतें बातें करते हुए दिख रहे थे. ठीक है. So he saw men and women talking. He tried to look intently among the patches of the bright yellow cloths, but there was no sign of his mother and father among these people. Now what happened? Over there he saw he saw many men right over there. He saw a lot of people over there standing, man and woman over there. So all over there he looked intently among the patches of the bright yellow clothes. Now mostly all of them, they were wearing yellow color clothes. So among these bright yellow colored clothes he was trying to find his mother and father, but he could not find them. Okay. Now who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. So he saw all man and woman, they were laughing, right? They were laughing and they were talking, right? And now he ran quickly again. So he ran quickly again, this time to a shrine. अब shrine क्या होती है? Shrine है a holy place, मतलब temple. ठीक है. सो ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग. तो मतलब पहले तो वो सारी जगह भागा, उसके बाद ही रैन टू अ श्राइन. श्राइन होती है एक हॉली प्लेस, दैट इज़ लाइक चर्च और अ टेम्पल और अ मॉस्क. ठीक है. नाउ इन विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग. तो वहाँ पे जो श्राइन थी, हॉली प्लेस थी, सपोज इट वॉज टेम्पल, तो वहाँ पे बहुत भीड़ हो रही थी. इट वॉज लाइक देयर वॉज अ लॉट ऑफ क्राउड ओवर देयर. ठीक है. Now every little inch of space there was congested with man, but he ran through people's leg. Now what happened? वहाँ पे एक इंच भी नहीं था जिस पे वो अपना पैर रख सकता. मतलब कहते हैं ना, पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ हो रही थी वहाँ पे. ठीक है. So there was every little inch of space was congested with man. मतलब बहुत सारे लोग थे, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी उस बॉय के लिए. Now but he ran through people's leg. लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच में से निकल रहा था. His little sobs lingering mother and father. अब नीचे पैरों से तो जा रहा था लोगों के, मतलब पैरों के बीच में से, और वो मम्मी पापा भी चल रहा था, लाइक मदर और फादर ऐसे चिल्लाते हुए जा रहा था. नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक. लेकिन जैसे ही वो टेम्पल के पास पहुंचा, एंट्रेंस, ठीक है, एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, वहाँ पे क्राउड और भी ज़्यादा हो गया. द क्राउड बिकेम वेरी थिक. मैन जॉस्टल्ड का मतलब क्या होता है? टू पुश अगेंस्ट समबडी इन अ क्राउड प्लेस. जब हम किसी क्राउडेड जगह में होते हैं तो भीड़ होती है, राइट? भीड़ में लोग एक दूसरे को धक्का भी मारते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं? जॉस्टल. ठीक है. सो द मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, मतलब आदमी एक दूसरे को धक्का मार रहे थे भीड़ में. हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज, उनकी आँखें भी एकदम मर्डरस आइज लग रही थी, राइट? एंड दे हैड अ हेफ्टी शोल्डर्स. नाउ the poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to. Now what happened? This poor child, he स्ट्रगल्ड, मतलब उसे बहुत मुश्किल हो रही थी उनके बीच में से निकलने के लिए, मतलब उनकी फीट, मतलब पैरों के बीच में से निकलने में. सो नाउ व्हाट हैपन? बिटवीन देयर फीट, बट नॉक्ड to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot. Now
Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and, stopping with the great difficulty, lifted him up in his arms. "How did you get here, child? Whose baby are you?" the man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now, and only cried, "I want my mother, I want my father." The man tried to soothe him by taking him in the roundabout. "Will you have a ride on the horse?" he gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs, and he only shouted, "I want my mother, I want my father." Now, what happened? This boy, he had a great difficulty in walking through the people's leg. Okay? Now, after over there, he might have been trampled underfoot. मतलब कोई इसके ऊपर पैर रखने वाला होता. ठीक है, सो उससे भी बच गया था. ना he not shrieked at the highest pitch. अब क्या हुआ उस टाइम जब कोई इसके ऊपर पैर रखने वाला था, someone was going to trample him, he shouted at his highest pitch, मतलब एकदम ज़ोर से चिल्लाया वो, "Mother, father," like this. Now there was a man in the surging crowd. So what happened? What is surging? Surging is moving quickly in a particular direction. तो जो crowd था, भीड़ थी, वो एक डायरेक्शन में, मतलब जो टेम्पल है उसके अंदर एक ही डायरेक्शन था वो, तो उस तरफ बहुत जल्दी जा रही थी. तो इन अ सर्जिंग क्राउड देयर वाज अ मैन, एक आदमी था. ही हर्ड हिज क्राई, ही हर्ड द बॉय क्राइंग, ठीक है, एंड शाउटिंग, "मदर, फादर," लाइक दैट. एंड ही स्टॉप्ड इन दैट क्राउड विद अ ग्रेट डिफिकल्टी. बड़ी मुश्किल से वो रुका उस क्राउड में. एंड देन ही लिफ्टेड द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, ठीक है, उसने बच्चे को अपने गोदी में लिया. एंड देन he asked, "How did you get over here, child?" तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे, यहाँ तक कैसे पहुँचे? "Whose baby are you?" तुम किसके बच्चे हो? The man asked as he steered clear of the mass. Now steered clear का मतलब क्या होता है? Steered clear of the mass means to move away crowd. सो जब जो क्राउड था वो जा रहा था, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टीयर क्लियर ऑफ द मास. नाउ द चाइल्ड वीप्ड मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, "आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर." तो जैसे ही वो उस आदमी की गोदी में था, उसने पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे बच्चे, तुम किसके बच्चे हो? तो तब और ज़ोर से रोने लग गया वो लिटिल बॉय, बहुत ज़ोर से रोने लग गया. और क्या बोल रहा था? "आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर." मेरे को मेरी मम्मी चाहिए और पापा चाहिए. ठीक है. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. तो जो मैन था वो उस बच्चे को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, सूद करने की कोशिश कर रहा था. कैसे? उसको पहले राउंड अबाउट में लेके गया. फिर ओवर देयर ही आस्क्ड, "विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स?" तुम्हें हॉर्स राइडिंग चाहिए, हॉर्स राइड करना है? नाउ ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग. वो जब उस रिंग के पास पहुंचा तो उसने एकदम प्यार से पूछा. Now the child's throat it tore into 1,000 shrill sobs, and he only shouted, "I want my mother, I want my father." Now what happened? This child, वो और ज़ोर से रोने लग गया. ठीक है, और ज़ोर से रोने लग गया. और क्या चिल्ला रहा था? "I want my mother, I want my father." अब बताओ, this boy, he wanted to take ride on the roundabout. He wanted to enjoy each and every ride which was there, right? But now, as he did not have his mother and father with him, he did not wanted to take a ride in roundabout or any of the horse, right? He did not wanted to take a horse ride or a roundabout, right? He just wanted his mother and father. And when he was having his mother and father before, what he was doing, he wanted to take a ride in roundabout, he wanted to eat burfis, right? Now the man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. "Listen to that nice music, child," he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, "I want my mother, I want my father." Now what happened? This man, then he went to the place where the snake charmer was there, and he was playing the flute for the swaying cobra, dancing cobra. Now what did the man say? He asked the child to listen to the nice music which the snake charmer was playing. Now what happened? This boy, he
he shut his ears with the fingers and he shouted, double pitched strain was there, I want my father, I want my mother. ठीक है, और जोर से वो चिल्लाने लग गया. Now the man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his ears from the flying the child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. Now what happened? This man, he then took him to the balloon seller. ठीक है, क्या सोचकर कि जो बलून के कलर्स है उसको देख के ये जो बच्चा है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब उसको ध्यान नहीं रहेगा कि उसके मम्मी पापा उसके पास नहीं है. फिर ही वांटेड टू कॉटन दिस चाइल्ड, मतलब वो बंद कराना चाहता था उसको रोना. ठीक है, सो देन ही आस्क्ड द चाइल्ड, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, कि तुम्हें रेनबो कलर्ड बलून चाहिए क्या? ही आस्क्ड परस्यूसिवली, मतलब अब तो ले लेगा. ऐसे वे में हम जैसे बोलते ना कि आप ये लोगे, तो ऐसे ही उसने पूछा कि वुड यू लाइक टू हैव अ रेनबो कलर्ड बलून. नाउ द चाइल्ड ही टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सोब्ड, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर. अब क्या हुआ, जो बच्चा था उसने जो रेनबो कलर्ड बलून्स हैं उनसे अपनी आँख हटाकर, मतलब उस तरफ नहीं देखा उसने, और क्या बोल रहा था, सिर्फ बोल रहा था कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर. ओके, नाउ the man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller said, look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. Thinking to hammer his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. Now what happened? This man, he then took him, he was trying to make the child happy. So he went to the gate and over there he took him to the flower seller. कहाँ पे लेके गए थे? एक फ्लावर सेलर के वहाँ पे लेके गए थे. और फिर जो मैंने उसने क्या पूछा चाइल्ड से कि कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स, क्या तुम उन अच्छे फ्लावर्स की स्मेल खुशबू ले सकते हो. वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम चाहते हो वो गुलमोहर का गार्लैंड था ना, डू यू वांट दैट. नाउ द चाइल्ड ही टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रीट्रेटेड. नाउ रीट्रेटेड का मतलब क्या होता है? रीट्रेटेड का मतलब होता है रिपीटेड एंड रिपीटेड हिज सोब्स, मतलब वो वापस रोने लग गया था. तो जो बॉय था ही टर्न्ड हिज नोज, मतलब उसने अपनी नोज दूसरी डायरेक्शन में रख दी अवे फ्रॉम द बास्केट एंड देन ही रीट्रेटेड हिज सोब, मतलब ही रिपीटेड हिज सोब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. नाउ थिंकिंग टू हार्मर हिज डिसकंसोलेट मतलब अनहैप्पी. ठीक है, सो डिसकंसोलेट का मतलब होता है अनहैप्पी, मतलब वो खुश नहीं था. तो थिंकिंग टू हार्मर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, मतलब वो सैड था, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था बच्चा. तो मैन थॉट कि इसको अगर हम स्वीट्स देंगे गिफ्ट की तरह तो ही विल गेट हैप्पी. सो द मैन ही टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप. तो व्हाट हैपन, दिस मैन ही टुक द बॉय टू द स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान पर लेके गया. राइट, नाउ व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक, चाइल्ड, तुम्हें कौन सी मिठाई अच्छी लगती है, चाइल्ड. Now he asked, the man asked him. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. अब जो बच्चा था उसने अपनी फेस जो है वहाँ से टर्न कर लिया, दूसरी तरफ मोड़ लिया और वो वापस रोने लग गया. I want my mother, I want my father. So children, we have completed this chapter, right? So this is it. We have completed this chapter. So in our next presentation we are going to continue, or we are going to start with the question answers, right? So please read this chapter because we have completed this chapter in this presentation, and with the next presentation we are going to start the question answers. So thank you.